Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So yesterday we saw that there was a bounce in the market. The Nifty was up by 146 point and it's close at 17,450. So we believe that after this ninth session of correction, we are lined up for the bounce back. The bounce should come close to 17,600 to 17,800 cash levels. So there's a bias is positive. Today being an expiry, we might have flat to neutral kind of flattish kind of expiry. 17,600 is a Nifty future level. That can be the expiry level where Nifty can close, whereas the Bank Nifty may close to 40,800. It's a cash level for the Bank Nifty. So the bias is positive. Even in the case of Bank Nifty, the Bank Nifty was up by close to 429 points, and it has moved out of its last 4 to 5 session trading range. So Bank Nifty was the strongest one. When the Nifty broke 200 SMA, even the budget day low, Bank Nifty has respected that, and Bank Nifty never broke that. So we believe that with the PSU Bank, which is looking strong, Bank Nifty will also start to perform. Like for example, Axis Bank and ICICI Bank are looking positive on chart. Once the HDFC banks starts performing, I think Bank Nifty will also start moving on the higher side. I believe Bank Nifty should be heading towards 41,000, 41,500 in the near term. That's the view for the Bank Nifty. And for the Nifty, I think Nifty has a potential to 17,600, 17,800. The reversal or the stop loss for all the long trends in the Nifty should be placed at yesterday's low. Yesterday's low was 17,350. So by any chance, if the 17,350 levels are broken, so the trading positions, the stop loss for the trading positions should be kept at 17,350 level. The same with the Bank Nifty. The Bank Nifty stop losses do come at 40,000. The Bank Nifty will be weak only if 40,000 levels are broken down on a closing basis. So we are having a positive view. We are looking for a continuation of the trading bonds on the higher side. Coming to the derivatives data, the Nifty future has seen a short covering in yesterday's session to the tune of minus 1.71%, which was a decline of 2.31 lakh shares. The put call ratio has gained from 0.67 to 0.92, which adds to this trend. The major additions in the call option was seen in 17,500 and 17,600. So that should be the immediate resistance. And on the put front, 17,400 and then 17,000. So that should act as a support. In Bank Nifty, they added the fresh long positions to the tune of 0.97%, which is the addition of 45,000 shares. The put call ratio has now recovered from 0.86 to 1.14 ratio, which is very strong. The major additions were seen in the 41,000 call option, so that will be resistance, and the lower side 40,600 put option. So that should be the support for the Nifty. The few stocks which are looking positive are Nalco, AB Capital, Federal Bank. These are the few counters which are looking positive. Additional to this, the long builders we were seen in yesterday's session was Adani Enterprises, HCL Tech, and Titan, whereas the short builders were seen in Cipla, Tata Steel, and UPL. Lastly, the FI data. The FIs in the index future has gone long by 6,000 contracts. They're still overall net short by 1,25,000 contracts. And this long short ratio from 15 has now improved to 18 ratio. So we believe that whenever this long net position of the FIs, which is right now at 1,25,000, when it comes close to 60,000, 50,000 level, that is the area when the reversals will be seen. The aggressive buying from the FIs will be seen. So this data should come close to 50,000, 60,000 levels. So right now it's 1,25,000 contracts short. So till that time, we don't see that the view from the FI's point of view will remain negative. They are maintaining a short position in the index future. So we are expecting whenever the Nifty starts moving up, even they will cut their shorts. And whenever that data is seen, we'll keep update the same. So that's all from me. I'll hand over to Archana madam for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with Newgen. Newgen has been selected by the third largest bank of Jamaica to implement its retail loan origination solution. Using the solution, the bank aims to reduce the loan processing time, increase efficiency through process automation, and enhance the customer experience.
This partnership will further enhance Newgen's revenue from the banking vertical, which makes up 66% of the total revenue as of now. This is the second deal win for Newgen in the past 2 months, and though the deal size has not been disclosed yet, we believe this is a positive development for the company. Currently, we have buy rating on the stock with a target price of 480. Auto companies have reported their Feb sales volume numbers yesterday. Overall, auto industry witnessed strong volume growth in domestic market, whereas the export market remains under pressure. PV sales are clearly on the growth path led by the M&M, which saw a volume growth of 10% YOY, followed by Hyundai and Tata Motors, which saw the volume growth of 8% each. And Maruti's volume were up by 5% YOY. On month-on-month, PV sales were down by 6%. Two-wheeler segment remained mixed bag as volume of Eicher and Hero MotoCorp was seen up by 21% and 10% respectively on YOY basis, whereas the TVS saw the flat growth in volume and Bajaj volume were down by 16% due to the weak export. CV segment saw the fastest volume growth during the month as Ashok Leyland and Volvo volumes were up by 27% and 25% respectively, whereas Tata Motors CV sales were up by 4%, and on month-on-month CV segment saw a volume growth of 7%. In the auto space, our top picks are Eicher, M&M, and Ashok Leyland. On Wipro, the IT services company has launched 5G DeFi platform. The said platform will empower businesses to seamlessly transform their infrastructure, networks, and services. On Suntec Realty, the Mumbai-based real estate development company has leased out 2 lakh square feet built-up area of its premium commercial building, Suntec BKC 51, to upgrade education for 29 years. Upgrade will be paying starting rentals of close to 300 rupees per square feet per month on carpet area basis. The total revenue generated from the project will be close to 2,000 crore over the entire lease tenure. So this comes as a positive development and the stock may react positively on this. On Axis Bank, the bank has completed the acquisition of Citibank consumer business in India at a total cost of 11,603 crores. The acquisition will add over 1.8 million credit card holders and deposits worth 39,900 crores into the Axis Bank's fold. We have buy rating on the stock with a target price of 1120. On HL, the Cabinet Committee on Security, the Cabinet Committee on Security approved procurement of 70 HTT-40 basic trainer aircraft from the company for consideration of 6,828 crore over the next 6 years. The positive development for HL. On L&T, the Union Cabinet approved the signing of a contract with company for the acquisition of 3 cadet training ships at an overall cost of 3,100 crores. On Aluwala contracts, the company has received order worth 1.7 billion for the construction works in Odisha. The order inflow till date stands at close to 50 billion, including L1 of 7 billion, and with this company has achieved 96% of the FY23 order book guidance. The order inflow bodes well for the company, and we have buy rating on the stock with a target price of 650. And lastly, on PVR, PVR yesterday stated that the combined entity of PVR and Inox plans to add 200 screens every year with a capex outlay of 700 to 750 crores. This is 11% higher than the earlier FY23 screen additions target. Also, the combined entity will focus on expanding in smaller markets and will aim to drive the double-digit revenue growth in FY24. We remain positive on both the stocks and believe the combined entity will benefit from the synergies in ad revenue and increasing ATP and SPH on revenue front and economies of scale. We have buy rating on both the stocks. So that's it from my side. Now I hand it over to Kshitija for further research updates. Thank you, over to Kshitija. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Few updates from my side. So first on Bajaj Finserv has received license from the market regulator SEBI to start the mutual fund business. The company will soon offer a range of mutual fund products, both in active and passive segments to investor. The next update on delivery. So Japanese multinational SoftBank Group has sold 3.8% stake in delivery through bulk deals of around 954 crore. The next update on KNR Constructions. Company has a back order of worth around 665 crore for the development of 6-lane access control Greenfield Highway in Andhra Pradesh. So basically, next update on Welspun Corporation. So company is awarded a contract of export LSAW pipes and bench
to the Middle East, which will be executed from its facility in Andhra, that is in financial year 24. Bharat Forge has a wholly owned subsidiary. Bharat Forge BF Infrastructure has executed a share purchase agreement with PNC Infratech and Feria Transistral Solution for the purchase of 51% shareholding in Peruia. Next update on SGFC. So SGFC is a partner with IRCTC to launch IRCTC SGFC Bank Credit Card, which will provide exclusive benefits on bookings through IRCT website and app and launch access and among others. So the management is said that the co-branded cards will grant exclusive access to the state-of-the-art of lounges open at various railway stations. Next on NMDC, so company has reported the iron ore data. Company reported 4% growth in its iron ore production at 4.48 million tons in February 2023 compared to 4.31 million tons same year last year. And sales of iron ore, however, declined by 4.78% to 3.78 million ton in February 2023 compared to same month last year is a 3.97 million tons. Next update on Lupin. So Lupin expanded presence in southern India with the new regional reference laboratory in Hyderabad. So management is expect to open over 200 collection centers in South India by March 2024. So this is a positive for the Lupin. Then next update on Mahindra and Mahindra. Company Mahindra and Mahindra introducing a new variant of Scorpio Classic called the Classic SY, which will be positioned between Classic S and Classic S11 trims. So the move has been likely made at a higher spec. Classic S11 is not selling as well as due to its price proximity to the Scorpio N. Then next update on Ramco Cement. So company Ramco Cement manufacturer Ramco Cement Limited has dealing with the situation of a high leverage. So increased working capital requirements and its capital expenditure capex guidance of 1,700 crore and 900 crore for the financial year 23 and financial year 24. So which will mean a little respite on a debt front. Then next update, NBCC India will award a tenders worth of around 5,000 to 6,000 crore in the next 4-5 months as the company plans to accelerate its project tendering process with the statutory approvals in a place. In the current fiscal, company has awarded a tenders of worth 4,700 crore and it has a consolidated order book of around 54,600 crore with work ongoing project is of 17,000 crore. It has a bond order worth 3,004 crore till date in the financial year 23. Then next update on GR Infra. Yesterday announced that it has secured a letter of announcement from the National Highway Logistic Management, that is NHLM, for the project worth is an estimated around 758.1 crore. The construction is engineering company informed that basically this LOA project develop and operate and maintain multimodal logistic park, that is MMLP, in Indore near Pithampur in Dhar district of Madhya Pradesh. The next update on Electra Greentech. So Electra Greentech announced that India's first 6x4 heavy duty electric tipper from its stable receiving India's first homologation certificate from the Indian Automobile Regulatory Agencies. So this electric tipper is now roadworthy and adhering to all the central motor vehicle rules. So India's first e-tipper by Electra is now roadworthy and first order of 20 e-tippers is the final stage of discussions. E-tippers is adheres to all central motor vehicle rules. The next update on RVNL. Company RVNL has emerged as the lowest bidder for the manufacturing cum maintenance of Vande Bharat train set, including upgradation of the government manufacturing units and train set of depots in GVMS joint stock company metro wagons 70% and joint stock company locomotive electric
Electronic system 5% and Rail Vikas Nigam Limited is a 25%. So as per the financial opening dated 1st March 2023, RVNL has been declared L1. Total quantity is 200 train sets and cost per set is around 120 crores. So that's it from my end. Now I will hand over to Hitendra for further Hindi updates. Thank you and over to you. Yeah, thank you क्षितिज एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं ऑटो कंपनीज के फरवरी के सेल्स नतीजे देखे गए। ओवरऑल इंडस्ट्री में दिखे गए तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिखे गए, जबकि थोड़ा हमें एक्सपोर्ट्स मार्केट में थोड़ा प्रेशर आते हुए दिखे गए। टीवी सेल्स दिखे गए तो सबसे पहले महिंद्रा ने टॉप किया सेगमेंट, जो कि वॉल्यूम ग्रोथ 10%, उसके बाद हुंडई और टाटा मोटर्स जिन्होंने 8% में ग्रोथ दिखाई। मारुति की भी वॉल्यूम देखा जाए तो 5% भी थे और टोटल मंथ ऑन मंथ अगर टीवी सेल्स देखा जाए तो 6% डाउन देखे गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर टू व्हीलर सेगमेंट में देखेगा तो थोड़ा सा मिक्स बैक था। आइशर ने हीरो मोटो को आपकी सेल्स 21% और 10% रिस्पेक्टिवली थी, जबकि टीवीएस की सेल्स फ्लैट थी और बजाज की सेल्स में हमें वॉल्यूम सेल्स में 16% का वीकनेस देखा है। बेसिकली ये मेन रीजन कंट्रीब्यूटर इसका एक्सपोर्ट सेगमेंट है। सीवी सेगमेंट में ग्रोथ हमें फास्टेस्ट होती हुई दिखेगी। अशोक लेलैंड और वॉल्वो में लीडर्स है, जो कि 27 और 25% की ग्रोथ से चलते रहे। वेरे टाटा मोटर्स का सीवी सेल्स 4% का ऊपर था मंथ में, जबकि सीवी सेगमेंट ओवरऑल ग्रोथ दिखेगी 7%। लास्ट हम देखते हैं ट्रैक्टर सेगमेंट में। ट्रैक्टर सेगमेंट में भी ग्रोथ हमें ओके दिखी है। एमएनएम की वॉल्यूम सबके 26% और एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम जो थे वो नियर अबाउट 27% ऊपर थे। सेंटीमेंट सबसे रूरल मार्केट की वजह से। तो इसी स्पेस में हमारे टॉप 6 हैं आइशर मोटर, एमएनएम एंड अशोक लेलैंड। नेक्स्ट हम आईटी सेगमेंट में आता है। आईटी सेगमेंट में न्यूजन को सिलेक्ट किया गया थर्ड लार्जेस्ट बैंक, जो कि बैंक ऑफ जमाइका है। वो बेसिकली इनका रिटेल लोन ऑर्गेनाइजेशन सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेगा और ये सोल्यूशन बेसिकली बैंक एम करता है रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम जो लगता है और एफिशिएंसी जो कि प्रोसेस ऑटोमेशन से होगा। सो अगर ये पार्टनरशिप भी देखा जाए तो बैंकिंग वर्टिकल 66% इसका न्यूजन का देता है, कंट्रीब्यूट करता है इनके टॉप लाइन में, जो कि सेकेंड डील रहेगी पास 2 महीने में और डील साइज अभी तक डिस्क्लोज नहीं गई है। करंटली हमारी बाय रेटिंग है 4 रेटिंग की टाइप प्राइस टारगेट के साथ। नेक्स्ट है विप्रो में। विप्रो ने लॉन्च किया है 5G डिफेंस साइड प्लेटफॉर्म। ये जो है सेट प्लेटफॉर्म जो पावर करेगा बिजनेस को सीमलेसली ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंफ्रा नेटवर्क सर्विसेज के लिए। सनटेक रियलिटी स्पेस में देखा जाए तो उन्होंने एक लैंड पार्सल लीज किया है 2 लाख स्क्वायर फुट का, जो कि बीकेसी एरिया में है। अपग्रेड को किया है 29 ईयर्स के लिए किया गया है। ओवरऑल रेंट अगर देखा जाए तो 300 पर स्क्वायर फीट रेंट रहेगा पर मंथ पर कार्पेट बेसिस के हिसाब से, और टोटल रेवेन्यू जनरेट लगता है उनके 2000 करोड़ हो सकता है तो पूरे टेन्योर में। जैसे हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का पूरा एक्विजिशन कर लिया, उनका कंज्यूमर बिजनेस, और टोटल कॉस्ट देखा जाए तो 11,603 करोड़ की हुई है एक्विजिशन में। इसमें 1.8 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स डिपॉजिट लगभग 39,900 करोड़ के आसपास रहेंगे एक्सिस बैंक के लिए। सो ये करंटली हमें इसकी बाय रेटिंग 1120 के प्राइस टारगेट पे है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने भी कहा कि उन्होंने प्रोक्योर किया 70 एचसीटी 40 बेसिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो कि कंपनी बनाएगी 6,828 करोड़ में अगले 6 साल के लिए। एलएनटी ने भी ये कहा है कि उन्होंने एक अप्रूव किया गया साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि अप्रूव करेगी 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप, जो कि एक कॉस्ट रहेगा 3,108 करोड़ का। अलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट को भी एक नया ऑर्डर मिला है 1.7 बिलियन का, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ओडिशा में। ये ऑर्डर इनफ्लो देखा जाए तो 50 बिलियन तक हो गया है टेल तक, और ये L1 बिल्डर रहे 7 बिलियन में, जो कि कंपनी ने अचीव किया 96%, जो कि इनके ऑर्डर बुक गाइडेंस का है। और ये ऑर्डर बुक के चलते अच्छा चल रहा, मतलब दिख रहा, अच्छे नतीजे दिख रहे हैं उसके लिए। पीवीआर ने भी कल कहा कि उनकी कंबाइंड एंटिटी जो पीवीआर आइनॉक्स से 200 स्क्रीन ऐड करेगी पर ईयर, और केपेक्स आउटले देखा जाए तो 700-750 करोड़ हो सकता है। ये 11% हायर रहेगा FY23 के एडिशन से। और ये बेसिकली मार्केट फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे छोटा मार्केट है वहाँ पे उन्हें लग रहा है जो रेवेन्यू डबल डिजिट ग्रोथ दे सकती है, और हमें लगता है कि हम पॉजिटिव रहेंगे दोनों स्टॉक्स पर। और हमें लगता है कि एंटिटी बेनिफिट करेगी सिनर्जीज के चलते और एड रेवेन्यू इंक्रीज हो सकती है एडीपी और एसपीएच के चलते। तो करंटली हमारी बाय रेटिंग है। और जैसे हम देखेंगे बजाज फाइनेंस को भी लाइसेंस मिल गया है वहाँ पे रेगुलर सेविंग के लिए, जो अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कंपनी जो है वेराइटी ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स और एक्टिव ऑफ सेगमेंट्स है। डिलीवरी ने भी कहा कि उनकी जो जापानीज कॉन्ग्लोमरेट है सॉफ्टबैंक, उन्होंने सेल किया है 3.8% का स्टेक डिलीवरी में, जो कि 950 करोड़ का है। डिश टीवी ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि जो उनके माइनॉरिटी शेयर होल्डर है कंपनी में, वो एलिज ब्रीच कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, और कंपनी ने कहा कि एलिगेशन जो है गलत है और मैलिशियस है, इनकरेक्ट है और बेसलेस कहा गया है।
मीना कंस्ट्रक्शन ने भी बात किया है ऑर्डर जो कि 665 करोड़ है, जो कि डेवलपमेंट 6 लेन हाईवे कंट्रोल ग्रीनफील्ड करेगा आंध्र प्रदेश में। वेल्सपन को आपने कहा कि उन्हें एक अवार्ड मिला है एक्सपोर्ट करने का एल्सो पाइप्स और बेंड्स जो कि मिडल ईस्ट में करेगा, जो कि एग्जीक्यूट करेगा ये फैसिलिटीज इन जर्सी। भारत फोर्ज के इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनकी बीएफ फोर्ज सब्सिडी है, उन्होंने भी एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया पीएनसी इंफ्रा के साथ, जो कि फेरोविया ट्रांसरेल सॉल्यूशंस फॉर परचेज ऑफ 51% शेयर होल्डिंग करेंगे फेरोविया में। एचडीएफसी और आईआरसीटीसी ने टाई अप किए हुए अपना क्रो बैंडर क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। बेसिकली इससे वो अपने ऐप से बहुत सारे डिस्काउंट्स और आईआरसीटीसी के कस्टमर्स को दे सकते हैं, और ऐप से लॉन्च एक्सेस भी उन्हें मिलेगा, जो कि रेलवे स्टेशन पर भी वो तैयार कर रहे हैं, और बाकी बाकी सारी भी बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज मिल सकती है। एनएमडीसी ने भी अपनी हाँ डेटा दिया है कि उनकी जो ग्रोथ देखी जाए तो आयरन ओर में 4.48 मिलियन टन थी फरवरी में, जो कि कंपेयर की गई 4.31 मिलियन ईयर अगो। सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया, जो कि 4.78% था, जो कि करेंटली 3.78 मिलियन है, और 3.97 था सेम ईयर लास्ट में। एमएनएम ने नया वेरिएंट लॉन्च किया है S5, जो कि S और S11 के बीच में है। बेसिकली S5 से लॉन्च किया, जो भी महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो एन है वो उसके बराबर में जा रही थी, तो थोड़ा सा स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए सेल्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है, उसके चलते वो इन्होंने ये वेरिएंट लॉन्च किया गया है। और बाकी हम आते हैं बाजार पे। बाजार हमें लगता है कि जो कि आज की एक्सपायरी है, अगर हम फ्यूचर्स में देखे जाए तो 17,600 से 17,500 के बीच में रहनी चाहिए। और ओवरऑल निफ्टी हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक ले सकता है। 17,600 17,800 ये लेवल से यहाँ पे अटक सकता है। सो हमें कॉशियसली लॉन्ग रहना चाहिए। हमारे लिए एक स्टॉप लॉस भी बनता है वीकली बेसिस पे देखा जाए तो अभी वीक का जो लो है 17,300 के आसपास रहना चाहिए। अगर ये वीकली क्लोजिंग पे क्लोज करता है तो मार्केट हमें लगता है यहाँ से वापस सरक सकता है 16 सबसे पहले 17,000, उसके बाद 16,800 या 16,500 तक भी जा सकता है। सो स्टॉक्स वैसे भी लॉन्ग सी रहना मार्केट में बहुत बेटर रहेगा, और जो भी लेवरेज पोजीशन देगी तो अगर हमें ऊपर में मिलता है और यहाँ पे एग्जिट करने का मौका वो हमें यूज करना चाहिए। वैसे ही हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी भी हमें थोड़ा बेटर ही लग रहा है निफ्टी से। बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना बजट डे का लो तोड़ा नहीं है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी वैसे मजबूती दिखा रहा था, 41,500 तक का बाउंस बैंक निफ्टी में भी बन रहा है। सो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख सकता है बैंक निफ्टी में आगे चलते। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉन कॉल। यू मे नॉट डिस्कनेक्ट।